you should not start with any other lab that is not mentioned in your syllabus. So strictly abide the syllabus. Okay. Yes. अब जनरल तो यही है कि हर एक बैच के लिए आपको 4 लैब्स कंप्लीट करनी होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ये 4 लैब्स दे रखा है, एंड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दीज 4 लैब्स यू विल बी अवॉर्डेड द बैच. और फिर थोड़ा सा ना आर्केड गेम का थोड़ा सिस्टम अलग है. Let me open a private window. Yes. If you guys have any queries, just raise your hands or ask them out. Don't sit on them. फिर ये पता So कैसे लगेगा arcade कि game, हमने आर्केड गेम करा है नहीं अभी? ये पता कैसे लगेगा? एंड ऑफ द डे शायद आपको एक मेल आ रही होगी, उसमें आपका कंप्लीशन होगा कि आपने कितने स्किल बैजेस कर लिए हैं, आर्केड आर्केड गेम कर लिया है. और इफ नहीं आ रही है, सो वी आर गिवन द लिस्ट ऑफ पीपल. ये हर रोज हम लोग के पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि कितने लोगों ने कितना स्किल बैजेस कर दिया है, तो आर्केड गेम कर लिया है. तो कभी भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क अस, हम लोग बता देंगे. माय वॉइस इज लैगिंग. Am I clear right now? Okay. Okay, Ansh, is that all right? Ansh? Yes, sir. Okay. Also respond. Don't sit here. Respond to us. We want it like a two-way communication. आप confusion है आप पूछो, and we also want that whether your confusion is being cleared or not. Okay. तो अब आते हैं आर्केड पे. अच्छा, लैब समझ आ गया सबको? ये लैब्स क्या हो रहा है? ये गुड. Yes, sir. बहुत बढ़िया. सो आर्केड गेम्स इज अ लिटिल डिफरेंट. जैसे यहाँ पर इतने सारे स्किल बैजेस हैं, हर एक में 4-4 लैब्स हैं स्किल बैच करने के लिए. आर्केड गेम सिर्फ एक है, एंड उसमें ना 8 लैब्स हैं. यू कैन सी हियर 8 लैब्स. एंड ये हर एक जीसीपी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ के हर एक पार्ट पे एक लैब होता है, काइंड ऑफ अ चैलेंज लैब. कि पहले कंप्यूट इंजन पे है, मतलब वेरियस टॉपिक्स. अगर मैं बहुत ही वीक एनालॉजी सेटअप करूँ तो आपके जो एंड सेमेस्टर होते हैं उसमें सारे यूनिट्स आते हैं. तो काइंड ऑफ आर्केड गेम ऐसा है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. एंड लैब्स जो होते हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए होते हैं. जैसे ये सिर्फ गूगल कंप्यूट के लिए है. कंप्यूट इंजन वर्चुअल इंस्टेंसेस जितने होते हैं ये उनके ऊपर होगा. सो दीज लैब्स आर मेंट टू ट्रेन यू ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ गूगल कंप्यूट. Whereas the arcade game is a collection of all these topics. आप हर एक टॉपिक को डिस्कवर करेंगे एंड फिर हर एक टॉपिक के ऊपर लैब करेंगे, एंड एंड ऑफ दिस आर्केड गेम यू विल बी अवॉर्डेड विद अ आर्केड बैज. नाउ यू कैन सी दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द लैब्स बैज. इसका बैच थोड़ा सा डिफरेंट है. दिस इज अ स्किल बैच, एंड इसका बैच द आर्केड वन इज अ डिफरेंट वन. तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग हैं. तो एनी डाउट्स कि लाइक कनेक्शन नहीं है इनमें, बट काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें हैं. तो समझ आ गया? इज दैट ऑलराइट? ओके ओके. ऑल्सो मैंने क्या कहा था कि जो की स्किल है वो है रीड. सो जो भी लैब चालू करना उससे पहले यू नीड टू रीड अबाउट इट. यहाँ पर आप पढ़ सकते हो सीरीज ऑफ हैंड्स ऑन लैब्स एडवेंचर दैट विल बी इन गूगल क्लाउड स्किल्स. विल डिस्कवर टॉपिक्स लाइक कंप्यूट स्टोरेज, नेटवर्किंग and Kubernetes, BigQuery and more. Walk through real world scenarios to boost your understanding. No prior experience required. काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे इससे पहले कुछ सीखना चाहिए टू ट्राई दीज लैब्स. तो जैसे यहाँ पर ही लिखा है नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड. यू डोंट नीड टू बी अ स्किल कोडर और प्रोग्रामर टू स्टार्ट विद दीज लैब. ऑल्सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ लैब्स कि यार मैंने ये चालू कर लिया नाउ अब मैं इसे कर ही नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू इट.
read about it in the read about it, then you'll get it. चलो फिर एक लेट्स डू वन लैब, लाइक और क्लियर एग्जांपल हो जाएगा कि कैसे करना है. तो लाइक इतना तो क्लियर ना कि यू कम हियर, आपने अपना ये प्राइवेट विंडो में खोला स्टेप 1, और फिर डोंट डू एनी अदर लैब्स, डू द लैब्स दैट आर लिस्टेड इन योर सिलेबस. देन यू कम अप हियर, 4 लैब्स हैं एंड यू पिक वन. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इन. So let me get the passwords. जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है, रिमेंबर दैट, एंड आप उसी से लॉग इन करना. ओके, पेस्ट इन हियर, साइन इन. ओके, तो यहाँ पर आके लेट मी रिफ्रेश. बेसिक्स ऑफ द. ओके, तो अब मैं आपको एक लैब करके दिखा रहा. स्टार्ट अ मॉड्यूल. सबसे पहले लैब है क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन. इस टाइप का इसका लेआउट रहता है. ऑल्सो हर एक लैब 100 पॉइंट्स की होती है. यहाँ पर ऐसा चेक योर प्रोग्रेस, जैसे इसमें 2 चेक पॉइंट्स हैं. पूरी लैब्स में कई सारे स्टेप्स लिखे होते हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टेप्स लिस्टेड डाउन देयर. यू नीड टू कंप्लीट एवरी स्टेप. आप हर एक स्टेप को एक एक करके करोगे. देन कम्स अ चेक पॉइंट. वहाँ पर लाइक आप चेक, यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल बटन दबाना होता है. फॉर एग्जाम्पल go to task 1 and यहाँ पर नहीं है this thing, check my progress. आपको यहाँ बटन दबाओगे, then it will do an internal computation. It will check whether you have created the lab or not. Okay, उसके बाद फिर you would be awarded the points. यहाँ पर फिर आपका प्रोग्रेस हो जाएगा. जैसे ये लैब 2 चेक पॉइंट्स में डिवाइडेड है and each is 50 and 50. तो फिर आप जैसे ये 2 चेक पॉइंट्स को क्लियर कर लो, ये योर टोटल स्कोर वुड बी 100 एंड लैब कब तक फिनिश कर सकते हो. मतलब अगर आपने ये 50 कर लिया, ठीक है, आपने अनदर 50 कर लिया, जैसे यहाँ पर दूसरा आ गया, उसके बाद स्टेप 3 पे मोस्टली ऐसे हो गया, हाँ आपने 100 स्कोर कर लिया, तो लाइक ये थोड़ा सा चीट कोड है कि आप ना वहीं पर लैब खत्म कर सकते हो. You don't need to do sit through the entire material. ऐसे अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बट लाइक ऐसे छोटा छोटा चीट कोड बता रहा हूँ. You can end that lab here. Also, अभी you will come here. तो यहाँ पे 4 labs listed है. कभी कभी क्या होता है, there would be more than 4 or less than, and some might not be required. जैसे यहाँ पर required ही लिखा हुआ है. So this means that आपको in order to attain this skill badge, you need to do all these required labs. Sometimes यहाँ पर कुछ labs आएंगे that won't be necessary for the attainment of the badge. तो उनको ना happily skip कर सकते हो, बाद में आके आराम से देख सकते हो, but you can skip them for that time being. तो ये 2 cheat codes हैं, remember them. And if you guys have any problems or questions, you can ask. अभी तक किसी को कोई डाउट या इशू जितना हम लोग ने अभी देखा यहाँ पे? You can type in the chat no if you don't have any issue, or you can raise your hands if you have an issue. Okay. Ritika is responding. No one else is listening or what? Okay. Mohan is also there. Mohan is, Raj is there. Cool. Good guys. Yes, Anjali is also there. Okay, don't sleep here, huh? This is
Not a pretty loud for you to sleep. खाना खा के नींद आ रही है क्या तुम लोग को? ऐसा है क्या? Okay, आशुतोष. Cool. No, good. So if no one has any problems or questions about it, so let's start or begin with the lab. आप बढ़िया सा लैब पे क्लिक करना है, then you'll be greeted to this window. यहाँ पर एक particular labs है, सब कुछ listed है. This is a lab. It will take around 40 minutes. ये आपकी upper time limit है. You would be given 40 minutes to complete this lab before all the resources are terminated for you. यानी कि काइंड जैसे एग्जाम होता है, आपको आधे घंटे में 1 घंटे में क्वेश्चन पूरा एग्जाम कंप्लीट करना है. उस तरह से यू हैव टू डू दिस लैब अंडर 40 मिनट्स एंड दिस लैब वुड बी ऑफ 1 क्रेडिट. और प्लस जैसे डिफिकल्टी, इफ यू हैव डन द लीड कोड क्वेश्चंस, यू नो कुछ इजी होते हैं, मीडियम होते हैं, देन देयर इज हार्ड. तो ये इंट्रोडक्टरी है. दिस इज अ वेरी इंट्रोडक्टरी lab for you guys. Okay, now comes the overview. So हर एक lab में, every lab would have an overview. उसमें लिखा होगा what you are going to do in this lab, what you are going to learn about this in lab, and there would also be a section about setup and requirements. ये आपको when you have started the lab, what all things you have to arrange in order to successfully do this lab. Okay. Paper. If you can read this. Does this not collapse? Okay. So this says use an incognito or a private browser window to run this lab. अब ये चीज ना, it would be listed on every lab. These two things, the overview of the lab would be given up, then the setup would be given up. So to do things, let's start by reading stuff. You need to read it. एकदम से confuse नहीं हो जाने का. Don't panic. Read the stuff. You might be doing something wrong. So let's start. Let's start a lab. Okay. Let's start. Launch this with 1 credit, and you'll start with the lab. You need to do things on Google Cloud Console. So you could click on this, and the console would open up. You don't need your emails. So आपकी emails हैं, the personal ones, the ones with you are doing this program, don't use them. यहाँ पर username and the password would be provided to you all. You need to use these only to complete this particular lab. ये password won't carry out for another labs. ये password is only for this specific lab, and this will kind of vanish away or go away when you complete this lab or end this lab. So you click on the Open Google Play Console, and you need to sign in. This कभी कभी यहाँ पर नहीं आता है, so you could copy your username from here, paste it in here, click on next. उसके बाद then you will be greeted with this password screen. Copy the password mentioned here. Sometimes कुछ labs में even more specific चीजें होती हैं जो कि यहाँ पर mentioned होती हैं. So always look out for all the things that are mentioned in your left sidebar. Now let's copy and paste it here. And I understand everything. Now this is the GCP project, the platform. I agree to everything. Okay. Our key point है, remember this, don't use your personal accounts. अब यहाँ पर जैसे this is the dummy account that you are being provided to do this lab. Okay, never check this, that your personal account should not be here. Okay, now let's read what you will do. So in this lab, in particular lab, create a VM with Google Cloud Console. So we will be going to create a VM. For all those who don't know what a VM is, VM stands for virtual machine, kind of shared computer. You must have read it somewhere.
Now create a VM with a G-Cloud command line. Deploy a web server and connect it to a VM. Okay, so we'll mostly learn about how to do VM. अब we have read कि हम लोग इसमें क्या करेंगे. Let's अच्छा prerequisites for this lab are कि आपको Vim आना चाहिए, either Vim, Emacs और Nano. ये काइंड ऑफ इंटरनल फैंसी टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं. कभी कंफ्यूज हो तो यू कैन ऑलवेज लुक देम अप ऑन द इंटरनेट. दिस इज नॉट मॉनिटर्ड और प्रॉक्टर्ड. अगर कोई भी दिक्कत हो ऑलवेज गूगल इट, चैट जीपीटी इट, डोंट वरी अबाउट इट. बट ऐसे नहीं समझना कि यू आर बीइंग प्रॉक्टर्ड सो यू कैन नॉट चीट इन दिस और कैन नॉट सर्च हियर. You can, but it is recommended you don't cheat. Then before on click start button आपका standard browser हो चाहिए, time to complete. Then these are the steps. अब अपना Google console button पे click किया, console पे गए, time remaining, ये सब चीज़ें on left आ रही हैं. आपका ये sign in करने के लिए this is the username, then there is the password. Next करना है, you need to accept the terms and condition. Do not add any recovery options. मतलब beside this, beside the sign-in process, don't touch anything. Leave it as it is. Activate Cloud Shell. तो इसमें ना कई सारी चीज़ें होंगी. Many would be a GUI that आपको click and stuff करना है. तो उसके लिए तो यहाँ पर हर एक नई नेविगेशन पेन है, यहाँ पर हर एक चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो. कुछ चीज़ें होंगी that would be only done by the command line. ऑल्दो दोनों चीज़ों का आप उससे कर सकते हो कि अगर आपको कमांड लाइन का दिया हुआ है तो यू कैन डू इट विद द GUI, एंड इफ यू आर asked to do a GUI you can always do that with command line. So this is activate cloud shell. ये जो यहाँ आइकन है, this is used to activate the shell. तो जितने कमांड्स वगैरह लिस्टेड होंगे उनको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा. कंटिन्यू, प्रेस कंटिन्यू. Any doubts, questions? कोई छूट गया क्या? किसी को लग रहा है अरे ये तो बहुत तेज भाग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा? No one? Let me check. No. पक्का सब कुछ समझ आ रहा है? Is that the case? Okay. Now if you are getting everything, then I assume that you will be able to do the labs. Okay. I want the increase in numbers of the skill badges. Questions हो तो ask us, but keep doing the skill badges. Okay. Let's keep on doing this, otherwise time चला जाएगा. Set of requirements के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा. Click on the cloud shell where this would be a cloud shell. Optional आप list run कर सकते हो. हाँ, steps would be optional. You can skip them. Authorize भी हमने authorize पे click कर दिया. And यहाँ पर सारे ये कमांड्स वगैरह सब लिस्टेड होंगे. आपको कहीं और से उससे जाके पढ़ के लाना या कुछ करना ऐसा नहीं होगा. अंडरस्टैंडिंग जोन्स. योर होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू जोन्स, क्योंकि हर एक सिटी नेशन का अलग अलग वो है, डेटा सेंटर्स होते हैं, तो हर एक का सबका अलग डिवाइडेड है. ओके, सेटअप हो गया. अब थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं. दिस इज ऑप्शनल but this one is required. Set up the region and zone. So set up the project region for this lab. अभी जितने भी सारे commands हैं, read about them one by one, copy करो and come here, paste it in the console and run them. So authorize it. Okay, updated property validation skip. चलो कोई नहीं. Now variable for region सेट हो गया, for zone सेट हो गया. काफ़ी लोग ना
ऐसा मत करना कि यू स्किप द सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स एंड यू स्टार्ट विद टास्क 1. अब जैसे यहाँ पर दे आस्क्ड अस टू डू दिस रिक्वायरमेंट सेटअप फॉर द कंसोल, तो इसको स्किप मत करना. डोंट जंप स्ट्रेट टू द टास्क 1, पूरा पढ़ो, देन गो line by line. Okay, now comes the task 1. In this section, create a new predefined machine types. Steps are कि आपको compute engine create करना है, VM instances. कई सारी तरह से आप जा सकते हो. This 3 bar icon यहाँ पर listed रहता है compute engine, VM instances, या तो फिर directly यहाँ बार पे सर्च कर लो I want VM. तो VM instances आ गया. अब इस पे जंप कर जाओ. अच्छा, कितने लोग बिल्कुल फ्रेश हैं कि लाइक ये सब क्या हो रहा है तो कुछ भी नहीं पता, मतलब कभी ट्राई नहीं किया GCP प्लेटफॉर्म, कभी AWS के बारे में नहीं सुना, Azure के बारे में नहीं सुना. Raise your hands. Okay, okay, okay. अच्छा, कोई ट्राई करना चाहेगा इसको समझाने का कि मतलब ये है क्या, GCP क्या है, ये प्लेटफॉर्म क्या है, किसी को कुछ आइडिया सा हो व्हाट दिस इज, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर. No one? चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ. क्लाउड कंप्यूटिंग द बिग नेम, शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो. सो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है. गूगल क्लाउड आपके जितने रिसोर्स होते हैं, मतलब ऐसा तो पता है कि लाइक यू नीड मेमोरी, यू नीड CPU, यू नीड, अब तो GPU लगता है फॉर एवरी AI स्टफ यू डू. तो ये सब आपको चाहिए होता है इन ऑर्डर टू गेट स्टार्टेड विद योर प्रोजेक्ट्स, योर स्टार्टअप और एनी ऑफ योर आइडिया. So there are two ways to do it. या तो आप अपना लैपटॉप, it works on my local machine kind of stuff करो. You buy a good gaming laptop with all GPU and stuff, and उससे आप चीज़ें host कर रहे हो. Either you can pay someone that will organize all this stuff for you, and you can access the CPU, the memory, the GPU, the databases, and the management through a platform like GCP. So Google Cloud क्या करता है? They offer you services like compute instances. VM instances यहाँ पर जो है, ये actually आपको computers मिलते हैं for you to run services, like अपना जैसे website portfolio बनाया, now you want to host it, you want to run it, तो उसको आप यहाँ अपलोड कर दो एंड उसके बाद ये CPU पे रन करेगा एंड यू विल बी एबल टू शेयर विद ऑल अदर पीपल. तो ये काफ़ी सारी चीज़ों का ना एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट, अर्बन क्लैप के बारे में कितने लोग जानते हैं? अर्बन क्लैप, गुड. तो अर्बन क्लैप क्या करता है? इट ऑफर्स यू सर्विसेज. यू use their app, ask for services, and they will provide services at your doorstep. Spa हो गया, water filters हो गए, and electricians हो गए. तो काइंड ऑफ ये कुछ वैसा ही है कि Google Cloud provides you services in terms of CPU, computing power, memory for your projects. आपके प्रोजेक्ट्स को रन कराने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो ये कहानी थी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP प्रोजेक्ट की. और इसका प्लेटफॉर्म ये होता है, यहीं से आप सारी चीज़ें एलोकेट करते हो. नाउ कमिंग बैक टू द लैब्स, ओनली 30 मिनट्स आर लेफ्ट. अब ये कह रहा है कि कंप्यूट, आप VM इंस्टेंसेस पे जाओ एंड क्रिएट अ इंस्टेंस. तो यहाँ पे बटन दिख रहा है, क्रिएट अ इंस्टेंस.
click on create instance. कभी कभी things are hidden in a plain sight. चारों तरफ एक बार देख लेना कि जो भी बोल रहा है वो कहाँ लिखा हुआ है. अब these are the parameters you can configure when creating a new instance. So यहाँ पर सब लिखा हुआ है. ये यहाँ पर कुछ फॉर्म सा आ रहा है, तो इनमें से क्या क्या सिलेक्ट करना है, क्या क्या करना है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है. तो जो नेम है वो उसका GC lab होना चाहिए. तो we copy that from there and paste it in here. Now region कह रहा है US East 1. So what happened? अच्छा, US East 1 set है. Then zone कह रहा है US East 1 D. So select D. Now series, what is series? Try to find it. अच्छा ये series, okay. Then you gonna select E2. यहाँ पे पहले से selected है. So let's. तो you can see here यहाँ पर सारे computers given है. इसमें जैसे हम लोग ने E2 सिलेक्ट किया है, तो इसमें हम लोग को 0.25 या 32 कोर्स का CPU मिलेगा, कंप्यूटिंग पावर. और मेमोरी 1 से 128 GB, टॉकिंग अबाउट द रैम. एंड इसका ये कॉस्ट आता है. ठीक है, ये कॉस्ट देख रहे हो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नेवर रन इट ऑन योर पर्सनल अकाउंट, वरना बिलिंग चार्जेस लग जाएंगे. ओके, सिलेक्ट दिस मशीन टू बी CPU. This should be a 2B CPU. 2B CPU है. E2 2B CPU, yes. 2B CPU selected है. 10 gigs of balance. Debian GN1. Bulls आया आपको सेट करना है. ओके, तो बूट डिस्क यहाँ पर है, इसको चेंज करना होगा. यहाँ पर हम लोग को बुल्स आया सेलेक्ट करना है. Debian 10 GB persistent disk. ओके, कर दो सिलेक्ट. एंड लास्ट स्टेप इज अलाउ HTTP ट्रैफिक. तो अलाउ HTTP. अब ये इतना सारा मुझको तो ऐसे याद हो गया, तो मैंने क्लिक कर दिया. और टेक योर टाइम, हो सकता है ना समझ आए, ना मिले, तो सर्च फॉर इट. और अगर तब भी ना समझ आए तो गूगल इट कि कैसे होगा. ओके, मुझको पता है जैसे जो लोग फ्रेश होंगे उनको लग रहा होगा यार बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इज़. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड. बट यू कैन सर्च इट, यू कैन लुक अबाउट इट, यूट्यूब पे देख लो और गूगल कर लो. आस्क अस अगर कभी भी लगता है कि यू आर स्टक हियर, सो आस्क अस अबाउट दैट. ओके, देन यू विल क्रिएट. क्लिक क्रिएट, ये क्रिएट हो जाएगा. देन अपना वो समझ लेगा. यू विल बी एलोकेटेड CPUs, you would be allocated memory, persistent disk, the volatile disk. किसी को कुछ तकलीफ वगैरह, कुछ दिक्कत? नो, ऐसे कैसे हो सकता है यार? यू आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चंस. इट फेल्ड. सी हियर इट फेल्ड. अब हो सकता है मैंने कुछ गलत कर दिया हो, या फिर ऑलवेज रीट्राई. कभी कभी ट्रैफिक के चक्कर में चीज़ें बिगड़ जाती है. Everyone is sleeping or what?
failed again. Yep. Yes, Rishi. Rishi, you were asking something? Understood. Magical. But still, क्या क्वेश्चन था आपका? Might be someone else. किसी और को भी दिक्कत हो रही हो. अच्छा, okay. Good. And it failed again. वाओ यार. तुम लोग आगे हो, तुम्हारे सामने हो नहीं रहा यार. It's even shyer than you. Am I missing something? किसी को कुछ लग रहा है? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? Outside, free, 10 gigs, palace name. Then we'll allow HTTP traffic. Wow. Oh, yeah. So 18 minutes are left. Task to install Nginx web server.
अरे अच्छा, दिस कैन हैपन। देखो मैसेज क्या आया, द जोन वी हैव सिलेक्टेड यूएस ईस्ट 1D। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा था यूएस ईस्ट 1D does not have enough resources available to fulfill the request। तो अब इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ओके, ट्राई डिफरेंट जोन और ट्राई अगेन लेटर। दिस कुड हैपन। पैनिक, रीड स्टफ, एरर पढ़ना आना चाहिए। चलो दूसरा जोन ट्राई कर लेते हैं। चलो एनी कर लो, जो भी मिले क्रिएट कर दो। सारे रिसोर्सेज फ्री टियर के हैं। रिसोर्स कोटा ठीक तो है। अच्छा देखो, अब इट गॉट क्रिएटेड यूएस ईस्ट। आपको इंटरनल आईपी एक्सटर्नल आईपी मिल गया। ऐसा नहीं हुआ। What happened? टेन GB PT बैलेंस। गरिमा, इसको शायद हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो फिर लोग लैब ही नहीं कर पाएंगे। कैन यू टेक अ स्क्रीनशॉट और मुझे भेज दो? अच्छा, स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एरर। डूइंग इट। ओके, डोंट पैनिक गाइस। अगर कभी भी ऐसा कोई भी दिक्कत आता है, ऑलवेज रिपोर्ट इट। वी विल सेंड इट टू द सपोर्ट टीम। और मोस्ट प्रॉब्ली आपके क्रेडिट्स भी रिफंड हो जाएंगे इफ इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। लेट्स ट्राई दी। ओके, तो ये यूएस 1B पे क्रिएट हो गया। फिलहाल शायद यूएस 1D जोन जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए, बट यहाँ क्रिएट हो गया ये। अब देख, अगर आपने ऐसा किया कि आपने जोन अलग कर दिया तो वो नहीं चल पाएगा आगे का जो स्टेप है। लेट्स सी। अब ही सेज टू SSH इनटू द VM। अब ये VM क्रिएट हो जाएगा, देन यू कनेक्ट SSH इनटू इट। अब दिस कंसोल is actually linked to the VM। जो आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया है वहाँ पर, ये वहाँ से लिंक्ड है। जो बढ़िया से टर्मिनल खुल जाएगा, then we'll start hacking into it। फिर नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉल nginx वेब सर्वर। तो कॉपी दिस कमांड, फर्स्ट विल अपडेट इट। ओके, वंस अपडेटेड nginx इंस्टॉल करेंगे। ओके, अब nginx को चेक करेंगे एंड यहाँ पर दिया हुआ यस। तो ये स्क्रीनशॉट है।
कभी भी आपको ऐसे आउटपुट मिला हो एंड यू नीड टू कंपेयर दोस टू, तो आपका आउटपुट एंड मोस्टली उसका एक स्क्रीनशॉट गिवन होगा कमांड लाइन का कैसा हो रहा होगा, तो काफ़ी सिमिलर आ रहा है, तो आप अज्यूम कर सकते हो यार इट्स वर्किंग। अब एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। काइंड ऑफ हम लोग ने अपना सर्वर वहाँ पर होस्ट कर दिया है। सो हम लोग का जो यहाँ पर एक्सटर्नल आईपी है, अगर इस पे जाएंगे तो हम लोग को एक ऐसा वेलकम टू इंजन पेज दिखना चाहिए। Here it is. इन शॉर्ट समरी, आपने एक इंस्टेंस, एक कंप्यूटर वहाँ पर चालू किया, यू इंस्टॉल्ड अ वेब सर्वर ऑन इट एंड अब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दिस आईपी कुड बी शेयर्ड विद एनीवन, तो कोई भी जैसे फिलहाल आप करना नहीं, बट दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। यू कैन शेयर दिस आईपी विद एवरीवन एंड दे कुड विजिट योर वेबसाइट। बेटर वर्जन होता है आप डीएनएस भी सेटअप कर लो, तो यू हैव अ डोमेन फॉर इट। लेट्स चेक माय प्रोग्रेस। ये फेल हो जाएगा क्योंकि प्लीज क्रिएट एन इंस्टेंस इन स्पेसिफाइड जोन, क्योंकि वो अभी नहीं हो पा रहा है, बट सारे स्टेप्स ऐसे ही रहेंगे। यू गेटिंग इट? फिर जो भी स्टेप्स हैं उनको आप यहाँ क्रिएट कर लो। चलो लेट्स ट्राई वन सेकंड। ओके गुड। Read about stuff. As a programmer you all are, you should be able to read errors and stuff. And अगर कुछ ऐसा generic error आता है कि they are not able to provide you disk space या traffic के चक्कर में आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, you should report it. Have a screenshot of it and send that to us. Could not pass resource. Zone mentioned. Okay. अच्छा हाँ, जोन का प्रॉब्लम होगा अभी भी। तो भाई जोन अभी फिलहाल लकीली हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि जब डेमो हो रहा है तब इतना मस्त सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिलहाल ये लैब कंप्लीट नहीं हो पाएगी अनफॉर्चुनेटली, बट यू गाइस गेट द जिस्ट ऑफ इट ना, कि हाउ थिंग्स वर्क। इसी तरह से अभी मैंने ये यहाँ दूसरे जोन में क्रिएट कर दिया है, बट इसी तरह से हो जाएगा। ओके And once you do all these steps, check my progress, eventually you would be awarded with points, like 50 and 50 of these. Then once you are done, तो थोड़ा सा test knowledge भी होगा, which of the following you can create VM instance. Now if you have read about अभी तक जितने steps हैं, if you have read all of them, then you would be able to guess it. Like G Cloud हम लोग command lines भी create कर चुके होंगे and console से भी कर लिया होगा, submitted. And once that is done, congratulations, you have completed your lab. Now you can end it. Now guys, I'm gonna end this lab because I'm not going to source allocate नहीं हो पा रहा है, so I won't be able to get these points. But this is the entire gist of it. Now these are the steps how you need to do it. Okay. You should always write about it and submit the code. Okay, so that was it. इस तरह से you will be able to do labs, and once you have done all the required labs, you would be awarded with a badge. Hello guys, any problems? Guesses? किसी को कोई भी issue, anything, you can type no in the chat if you want. Also, guys, I guess the idea is to become a better programmer here. So first of all, I guess you all should try to debug the errors on your own, like going to websites like Stack Overflow or Stack Exchange, or even going through ChatGPT and all, to first debug the error on your own.
because the idea is to become a better programmer here. If you always ask all your doubts directly, all related to programming, not related to like you didn't have the access code and all that, you can directly ask us. But if you have some programming doubts, then first try to debug on your own, and after that you can definitely ask us. We would be happy to help you. Also, one more point, you should be able to pinpoint. Like आपको पता होना चाहिए कि एरर आ रही है, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है. So you should always try to pinpoint the error. Okay, so अभी जितने लोग यहाँ पे हैं, they'll try out one lab and then they'll inform us कि कौन सी lab तुम लोगों ने की है, ठीक है? I just want to see कि तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है and you're able to do it. Okay, is that clear? You can show your reactions or anything. देखो यार, Rohan doesn't even have credits and he's showing a positive reaction. See, hi you guys. Yeah, redeem your credits first of all. Like many people have not redeemed your credits, so I suggest you do it as soon as possible, and then you start doing your labs. Okay. Okay. Swati, is your issue resolved? Okay. Have you mailed the team? Okay, cool. Once your issues are resolved, Swati and Rohan, you can text me, okay? And also, yeah, do your labs and the arcade as soon as possible. We are receiving the progress report every day, okay? So we know who are attending the labs and how many labs you have done and everything. So from tomorrow or from today evening only, we'll try to create a leaderboard of the top 3 people who are doing their labs regularly. And yeah, so let's see who wins. Maybe we'll have something for them. So yeah, anyone has any more doubts, you can tell us. Also, anyone here interested in becoming a backend engineer or anything? No one? Okay, if there's anyone who would watch the recording and if he or she wants to become a backend engineer or etc., then I guess cloud is like a very crucial step in the way. And like just first of all go through the free tier things only, and after that you can like access anything. Okay, did you guys learn something from today's lab? Anything which you did not know and now you know it? You can type okay, you can give your reactions. I don't know why you're not being interactive at all. Apart from the part कि ये कैसे demo नहीं करते. This was a very prime example of how you should not do a demo lab. Okay, guys, you should check things beforehand and then do that exact same lab in demo lab. And also, anyone has any issues like what we had today,
like the resources were not allocated or you're not able to access your labs or anything, then you can text us, you can send any screenshot of that error and you can send it in the group, or you can personally send us a message. We'll look into it and we'll try to solve the problem as soon as possible. Okay. Okay. One more thing, as a motivation, I want to tell you, ki you must all be doing DSA, and you must all be learning about the web development stuff. React trending there, so let's study that. But remember this, that even more interesting is the backend part, the thing that we are doing today. If you look at the syllabus, you can see the cloud storage. Every startup, every company has switched to an pay as per you go service. Like they pay for the services. They don't have their own computers, their infrastructure. You know, AWS is trending so much right now. Why it is? Because every company have shifted their model to a completely a kind of off premises infrastructure. They don't install anything. They don't uh, manage anything. So it's a very great win-win for them. Plus, if they don't do that, then they need engineers to handle this backend part. So if you are able to learn and do labs and get knowledge, gain knowledge of the GCP project, the platform, then you would have a cutting edge over other candidates. React सब कर रहे हैं, DSS सब कर रहे हैं, but if you are uh, looking for something that would make you stand out of the crowd, this is a golden opportunity. Okay, you would be able to tell people that I have done the GCP platform, I know how to create an instance, I know how to manage a database, I know how to make subnets and do networking for my company. There are many events and going on for people to educate about the cloud stuff. Most people, this is fairly complex. I would completely admit that this is complex thing. But if you are able to crack this, you know, JEE Advanced was also complex, correct? Everything is complex. But if you are able to crack them, then you would have a golden opportunities, right? You are getting it what I'm saying. So take this as a motivation, that if you are able to do stuff all the mentioned in these labs, then you would have the knowledge of the of a backend engineer. You could apply for roles. Ari, that is very good. See, Rishi, he was so motivated he completed his lab. That is the motivation. Good, Rishi. Now what's next? He is even asking for what's next. Do the second lab. Good, guys. Keep yourself motivated. The one who has Okay. the knowledge wins it. Okay, just one thing, Rishi. You received a syllabus. I'm just telling everyone, you received a syllabus on your mail that you got. You just have to open each of the skill badges, and inside those skill badges, all the labs are mentioned. You just have to do each lab one by one so that you complete all the 4 labs inside each skill badge. And once all the labs are completed, all the 4 labs, then you'll receive that skill badge. So like it's all mentioned in the syllabus, and once you open each link, you'll be redirected and you can see what labs are there. It's all direct. If you still have any doubt, then you can ask us anywhere. Okay. And don't do any lab which is not mentioned in the syllabus. Aside from the syllabus, don't go anywhere else. Yeah, you can do it once you have done all these, because these are important for the study jams.
Once you're done with this, if you still have credits left, then you can use them on other labs. But after you do these labs, because these are all credit labs and credits are important, so save them. You don't, waste the credits, and try to do it in one try if you can. If you're not able to, then it's fine, you can redo the lab, but try to do it with on the first try. And if still anyone has any doubt regarding the syllabus or what labs to do, you can message in the chat, or you can message later on WhatsApp, whichever is fine with you. Okay. See, I think that's what Ashish was telling till now, what it was, right? Ashish. So the thing you are asking is कि फायदा क्या हुआ, right? Overall advantage of doing these labs. अच्छा, supposedly suppose that you are a backend engineer, software development engineer at a firm. Let's say you are very good at it and you are doing your backend engineering job at Zomato. Okay, now they want to start a new product. They want to compete with Swiggy. Swiggy launched their Instamart, right? They see that there is a profit, so Zomato also wants to dive into it. I'm not sure if they have their own Instamart stuff or not, but they want to do it. Now, what is going to be the first step? They would be planning on it. They would be uh, designing stuff. Then the steps comes is that you need to craft the infrastructure for your app. When you start making an app, let's per se a React app, you need to have Node, right? Then only you can make a React app. You need to have the Node installed on your machine. So this is how. Similarly, if you want to have a very good project, you need to have the foundation for it. Now, this is the foundation. You said that if I'm talking about the VM instances, what are these? Likewise, if the company don't installs computers on their machine, they don't host things. अगर वो अपने यहाँ से computers पे machine नहीं चला रहे हैं, कोई भी काम वो अपने यहाँ से नहीं कर रहे हैं, then उन्हें फायदा कैसे होगा? मतलब कैसे वो करेंगे? They buy computers from Google. कि हमको we are giving you money, you give us the computers to work on. Kind of. तो जैसा भी SSH किया था, then you were logged into that machine. This is a physical machine running on their premise. टोटल एडवांटेज ये रहता है इसका कि आपको सीखने को मिला कि हाउ यू कैन स्टार्ट अ कंप्यूटर एल्सवेयर, कहीं और पे कैसे कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, हाउ टू गेट योर कोड रनिंग देयर, वहाँ पर कैसे कोड रन किया, फिर वहाँ पर एक एक्सटर्नल आईपी आया था. अगर आप अपना DNS डोमेन नेम सिस्टम भी इसके साथ अटैच कर लो तो यू कैन शेयर योर डोमेन्स टू एवरीवन. सब लोग zomato.com पे जा सकते हैं और वो जो है वो कहीं और रन करना है आप. So this is how backend works nowadays. You have a computer somewhere else that has your code. It is attached to a domain name system. कोई वहाँ से आता है, लोड आता है, एंड देन ट्रैफिक जो होता है वो इधर माइग्रेट कर दिया जाता है. इस लैब को करने से आपको ये पता चल गया कि हाउ यू सेट अप दीज कंप्यूटर्स. इसी तरह से बहुत सारे लैब्स है. इफ यू लुक एट द सिलेबस, क्लाउड स्टोरेज. अब क्लाउड स्टोरेज के बारे में जानोगे आप. अच्छा, अगर आपने कोई मान लो वेबसाइट्स बनाई, ठीक है, उस पर इमेजेस तो रखते होगे. अब वो इमेजेस कैसे मैनेज हो रही हैं? कोई कैसे करना चाहता है, मतलब कैसे हो रहा है? हाउ डू इमेजेस आर बीइंग मैनेज्ड? कोड तो मानो चलो रैम पे रन कर गया, CPU से बढ़िया चल रहा है, इमेज कहाँ जाती है? इमेज रैम पे तो लोड नहीं होती. I'm waiting for answer. अगर किसी को पता हो कि how is this stuff managed. Correct. Yes, Rishi, they are stored on a storage somewhere else and they are then fetched from it.
दिस इज हाउ स्टफ वर्क्स. अब मान लो तुमको इमेज स्टोर करना है, कैसे करोगे? You want to specifically store a particular image on the Google Cloud Storage. So first you need to learn about it. अभी तक क्या है देखो, अभी मैं बता रहा, the current situation for the technology stuff environment is that there are many wrappers. Vercel एक रैपर है AWS के ऊपर पूरा, ओके. सिमिलरली बहुत सारे रैपर्स हैं, दे एब्स्ट्रैक्ट अवे द रियल अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम यू. आपको पता भी नहीं लगता है कि कैसे काम कर रहा है, एंड ये सब ऐसे ही चलता रहता है. बट इफ़ यू आर अ बैक एंड इंजीनियर, जो कि काफ़ी लोग बनेंगे, हम 100% श्योर अबाउट इट, काफ़ी लोग बैक एंड इंजीनियर बनोगे, तो फिर आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए. आप जैसे मान लो वर्सेल पे ही काम कर रहे हैं, आपको अब पीछे बोल फॉर यूजर्स, तो वो तो सिर्फ क्लिक एंड कॉपी कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हो? आप वहाँ बैठ के यू आर एडजस्टिंग पैरामीटर्स, यू आर राइटिंग कोड टू मैनेज ऑल ऑफ दिस. सो बैक एंड इंजीनियर का काम होता है कि दे शुड हैंडल ऑल ऑफ दिस स्टफ. एंड ये सब चीज़ें इनफैक्ट आपको पढ़ी होगी, जितना ओएस रहा होगा, माइक्रो प्रोसेसर स्टफ, वो कंप्यूटर साइंस में क्यों पढ़ाते हैं? बिकॉज दैट इज हाउ कंप्यूटर्स वर्क, दैट इज हाउ दिस ऑल दिस वर्ल्ड वर्क्स. अब ये सब लैब करके ना आपको हर एक पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगा. हाउ डज दिस कंप्यूटर वर्क्स, वीएम क्या होता है, वीएम क्यों चला रहे हैं. उसके बाद जैसे क्लाउड स्टोरेज पे आएंगे तो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है. देयर वुड बी एब्सोल्युटली, आई हैव डन अ लैब इन इट, इफ आई कुड रिकॉल वेल. इसमें आपको एक इमेज मिलता है, आपको इमेज स्टोर करना होता है, और सब कुछ क्लाउड स्टोरेज में बाइनरी फॉर्मेट में रहता है. दीज आर ब्लॉब स्टोरेजेस, ओके. तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा. व्हाट आर एपीआई गेटवेज. अब एपीआई होस्ट किया, किसी ने बनाया हो, होस्ट किया, उसे लोग कॉल करते हैं, तो उसको मैनेज करना होता है. आप लोड बैलेंसर्स लगाते हो, लोड मैनेज करना. जैसे अभी देखो ट्रैफिक आ रहा था, हम लोग वीएम नहीं बना पा रहे थे वहाँ पर, तो उसे क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज इट वॉज नॉट वेल मैनेज, या हो सकता है रिसोर्स लिमिटेड हो, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था. तो ये सब चीज़ें आर वेरी स्ट्रांगली नेट टुगेदर, और हर एक लैब करके आपको हर एक पार्ट के बारे में नॉलेज मिलेगा कि हर एक चीज़ कैसे कंप्यूटर्स पे स्टोर होता है. एंड दिस इज द मॉडर्न टेक स्टैक. हर एक स्टार्टअप कभी AWS यूज़ कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का Azure यूज़ कर रहा है, या तो फिर GCP प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं. दीज आर द थिंग्स, ये कैसे मैनेज होता है. गेटिंग इट ऋषि? I guess every backend engineer right now needs to know at least 4 of the cloud technologies, which are load balancer, a caching mechanism, a cloud storage, and a virtual machine instance. These 4 are the most basic prerequisites for every backend engineer right now, and not just for backend rules, also for DevOps rules. I hope some of you might have heard of the catchy term DevOps here. So that is also quite trending right now, and the foundation of all that is cloud only. And also you might have seen that during the lab he was trying to set up Vim machine, etc. So for that you also need to know a bit of Linux also. So these are the things which are right now extremely trending in the world of technology, and you all should be knowing all this stuff, because after all, when you would be employed in a company or a startup, then you would be doing all these things only. So it's better that you get to know of them already. Is it okay now? Or was I not able to suffice you? Okay, so
Okay, Rishi. I think he's Okay. understood. Okay, fine. Anyone else? I just want to see who all are awake still. Can you just raise your hands just once and then we'll end the meet? Okay, cool. So you all heard what was going on in the meet, right? Okay, so we told you everything what we know, and if you have any doubt, you can reach out to us. I just want to tell you that again. Any doubt, just reach out to any of us on WhatsApp or just message on the group. Uh, okay, I think that's about it. Anyone has any questions? You everyone is clear, right? So I hope I'll see more participation from you guys. Okay, we'll end this session for now. Thank you for coming. Thanks for joining in, everyone. We'll wrap up right now. Bye, guys.